Think about this. Who are you and me and anyone else other than a collection of memories? जो चीज आज हम कर रहे हैं ये you know decide this is called timelines. Okay, just think about this. Who are you and me and anyone else other than a collection of memories? यानी हमारे हमसे अगर हमारी memories ले ली जाए, how do we know who we really are? And it's like when we get up in the morning, how do we know who we are? How do we know कि ये मेरा घर है और मेरे बराबर में जो सो रहा है या सो रही है ये मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है या मेरा बच्चा है? इट्स लाइक how do we know कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, or for anything for that matter, how do we know what we know? Okay, and the reason we know is because we have memories that tell us. If we don't have any memory, we wouldn't know anything. So if you think about this, कि इंसान की जो आइडेंटिटी है अगर वो भी ना हो तो इंसान को अपने आप को पहचान नहीं सकता. सो ये जो आइडेंटिटी है, सो इट्स लाइक हाउ डू वी नो कि मैं कौन हूँ? ठीक है जी, मैं जब आया दुनिया में तो मेरा कोई नाम नहीं था, दुनिया में घर वालों ने बड़ों ने एक नाम दे दिया, वो नाम हमने भी मान लिया. ओके, वो नाम इतनी बार दोहराया गया कि हमने वो अज्यूम करना शुरू कर दिया कि भाई यही मैं हूँ. लेकिन how do I know कि ये मेरा ही नाम है, किसी और का नाम नहीं है? That's because we have memories. Just think about this. Okay, so जो चीज इंसान को अक्सर बौखर कर रही होती है, memories. Okay, हम कभी ख्वाब देखते हैं अक्सर बचपन के, memories. कभी कोई पास्ट में कोई चीज हो गई, वो हमें बॉदर कर रही है, अच्छा फील हो रहा है, memories, बुरा फील हो रहा है, memories. It's just memories. So how do we organize those memories? That's what we'll be looking into इंशाल्लाह ताला आज और आज कल के सेशन में. तो इस अगर फर्स्ट करो मैं आपसे कहूँ कि मुझे इशारा करके बताओ कि तुम्हारा माजी किधर है? Okay, and I want you to do this right now, by the way. Okay, even though अगर आपका कैमरा ऑफ है, still I want you to do this. I want you to point with your finger, okay, in the direction wherever that is. It's like past, पीछे है, आगे, इधर है, उधर है, इधर है, इधर है, wherever that may be for you. Okay, just point with your fingers. Okay, where is your past? And then once you point in that direction, if I ask you where is your present, आपका हाल कहाँ है? Okay, again it can be anywhere. So if I say and आपका future किधर है, मुस्तकबिल कहाँ है, then where will you point? Again it could be here, anywhere. Okay, just point with your finger. And once you have done this, if you just imagine a line कि जो आपके past, अगर फर्ज करो किसी का पीछे है and आज से आ रही है, यहाँ present में आ रही है and it goes into your future, और अगर past जो है it's on either side, वहां से शुरू होता है and then you प्रेजेंट से गुजर के इधर जाते हैं, और इन एनी अदर शेप ऑफ इट. इफ यू जस्ट इमेजिन को एक लाइन जो आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर को आपस में कनेक्ट करती है, इस लाइन को हम बिल्कुल सिंपली आपकी टाइमलाइन कहते हैं. ओके, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू इलिसिट अ टाइमलाइन. सो हम जो टाइमलाइंस हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद थियोरेटिकली समझें पहले, तो दो मेजर इसकी you can say distinctions हैं, and these are not the only distinctions but these are the major ones. इसकी एक कैटेगरी, एक जो कॉमन सेटअप है उसमें ये है that for the person the past is behind them, okay, and their present is where they are, so that's like inside the person, and their future is in front of them. Okay, so this is probably something that several of you found today. So the past वहाँ है, present यहाँ है, future सामने. So it's like a straight line. Okay, ये वाला जो setup है इसे in time कहा जाता है. इस setup की कुछ कुछ general characteristics हैं.
एंड जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें एक चीज ये है, these people have a tendency, and एक और चीज, again I keep saying this again and again, it's good that you remember, there is no good or bad in NLP, there is no right or wrong in NLP, it's about what works and what does not. So something works for you may not work for me, something that works for me may not work for someone else, you know. It's like जो मैं कल बात कर रहा था कि एक जो प्रॉब्लम लोगों के साथ इस वक्त क्या बनी हुई है, they're like always searching for a guru, okay, and the guru out of his or her ego just wants to prove that, oh, I have the secret of success, I am the expert, I know, and I will answer your questions, while they're unable to answer their own questions, okay. But they have this thing that they will answer your questions and solve your problems. और मेजोरिटी लोग जो हैं वो शीप की तरह रहते हैं और वो भेड़ चाल के अंदर हर एक को फॉलो करने लगते हैं. So please don't develop that. Stay out of that mentality. Okay. So इसमें अच्छा और बुरा कुछ नहीं है. जो चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, be very clear about this. So सही या गलत, अच्छा या बुरा के लिहाज से नहीं बता रहा हूँ. I'm telling you some of the common characteristics that people who have in time setup follow. So some of their characteristics is, these people have a tendency to repeat their mistakes. Okay, so since their past is at the back and their future is in the front, so they don't tend to learn from the mistakes they made in the past. So think about this. How many times have you had this? कि हमारे मुल्क में देख लो, this is a general setup जो हमारे यहाँ पाया जाता है. Generally गर्म ममालिक में, generally Asian cultures में, Islamic world में, generally speaking masses में ये timeline prevail करती है, जिसे हम in time कह रहे हैं, past पीछे present या future सामने. Okay, और इनमें जो general characteristics हैं, इनमें से ये एक चीज है कि जी they have a tendency to repeat their mistakes. Think about this. हमारे यहाँ एक सियासी जमात आती है, वो आके बड़े हमसे वादे करती है अपने, और हम उसको वोट देकर लेकर आते हैं. उसके बाद वो मुल्क को लूटते हैं, खसूटते हैं, ऐसी तैसी कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में आते हैं और वो फिर दोबारा उसी तरह वादे करते हैं, और हम उनको दोबारा उसी तरह से उसी जोश व खरोश के साथ फिर लेकर आते हैं. ये तो हम एक लाइक उस स्केल पे कर रहे हैं. एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट दिस, कि हम कोई गलती करते हैं और हम उस गलती को सो फॉर एग्जांपल हमने किसी को पैसे दे दिए, कि किसी ने आके हमसे पैसे मांगे, हमने इसको पैसे दे दिए, और उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ी तो उसने हमें पैसे नहीं दिए, और उसने हमें खूब रुलाया अच्छी तरह से पैसों के लिए. किसी ने दिए, कभी नहीं दिए, लेकिन कुछ अरसे के बाद वही शख्स वापस हमारे पास आता है, और वो शख्स जब हमारे पास आता है और हमसे बड़े माफी तलाफी करता है और रोता धोता है और अपनी मजबूरियां बताता है और दोबारा हमसे पैसे मांगता है, हम उसको फिर पैसे दे देते हैं. So we have this tendency to repeat our mistakes. That's one of the characteristics. The other characteristics, these people are very emotional. Now since इनकी जो memories हैं, they are associated, they are in the experience. So for them, like हमने इस modalities में क्या चीज सीखी थी कि association feelings को strong करती है. So the person is in that experience. So for them, it's a strong experience. The other thing that it does is कि इन लोगों में एक tendency होती है कि they have a tendency to it's like आपने टाइम दिया सुबह 10 बजे का, तो अगर आप 10:15 बजे 10:30 बजे भी आ रहे हैं तो ठीक है, you're still in time. अब गौर कीजिए हमारी शादियों में क्या होता है, कार्ड के ऊपर टाइम लगा होगा 9 o'clock sharp, और अगर आप 10:30 बजे 11 बजे भी पहुंचते हैं तो पता चलता है अभी घर वाले भी जो है वो पूरे नहीं आए. So that's how it works. It's like Arab world में, if you have lived there and if you worked there, you may have seen this कि this is one of the things कि आपने उसके साथ मीटिंग हो रही है और मीटिंग के अंदर उनकी जी बड़ी इंपॉर्टेंट सीक्रेट मीटिंग है और उसके अंदर कोई आ जाएगा फ्रेंड, वो उसको भी बिठा लेंगे. Okay, so but that's how our orientation of time is, and that's what these are some of the things it does to us. Okay, so again, as I'm saying, it's not about right or wrong, it's not about good or bad, it's just this is the way it is. How many times have you had this कि कोई गेस्ट आपके घर आया, चंद दिन वो रुका, और रुकने के बाद जब वो जाता है, then you feel like there is some kind of emptiness. That's again because we form those associations. Okay, and have you heard this कि हम अक्सर कहते हैं यार छोड़ यार मट्टी पाओ, okay, पीछे डालो, आगे की सोचो. Okay, और अक्सर लोग इस तरह की बातें करें, जब आएगा, जब वक्त पड़ेगा तो देखा जाएगा. हमारा मामला दुनिया के अंदर भी और आखिरत के मामले में भी यही बना हुआ है कि जब वक्त पड़ेगा तो देखा जाएगा. Okay,
सी एक इस सेटअप को के बारे में कहा यह जाता है कि जब एक जमाने में सब इंसान इसी सेटअप पे ही चलते थे, ओके, ये पास्ट इधर, प्रेजेंट इधर और फ्यूचर आगे, एंड सो दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। हाउएवर जब यूरोप में और ठंडे ममालिक में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और इंसान ने घड़ी भी बना ली, तो लोग जो है बहुत ज्यादा टाइम के बारे में प्रिसाइज होने लगे, ओके, कि इंडस्ट्री लगी है, सुबह 8 बजे शिफ्ट स्टार्ट होगी, दोपहर 4 बजे तक शिफ्ट होगी, 4 बजे से दूसरी शिफ्ट शुरू होगी, 12 बजे तक होगी, 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर प्रिसाइज, ओके। और इफ यू थिंक अबाउट दिस कि हम स्कूल्स में, हैव यू एवर थॉट ऑफ इट बाय द वे, why do you have to go to school, or why do you have to send your children to school at 8 o'clock? Okay, why not at say 10 o'clock? Okay, why do schools begin at that time? Because there's a system, so it's like when they grow up, and ये जो schooling का system हमारे यहाँ राइज है, इसका जो एक बेसिक पर्पस है वो क्या है, आपको लेबर तैयार करना है कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो कल को जाके उसने इंडस्ट्रियलिस्ट को सर्व करना है, इंडस्ट्री में काम करना है, तो उसके लिए इस तरह से काम करना बड़ा आसान होगा। और आजकल तो जो इवन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, MBA कोई बच्चे कर रहे होते हैं, तो पता जी रात को 10 बजे भी क्लास हो रही होती है, ओके, रात को 8 बजे क्लास शुरू हो रही है, 10 बजे खत्म हो रही है, 10 बजे शुरू हो रही है, 12 बजे खत्म हो रही है। मेरे भांजे पाकिस्तान में MBA कर रहे थे एंड ज़ेबिस्ट के अंदर थे, एंड दे हैड दिस काइंड ऑफ टाइमिंग। व्हाई? बिकॉज इसका एक फायदा देखो क्या होगा कि जब ये बच्चा पढ़ाई के लिए घर से इतनी रात को बाहर है, तो घर वालों को आदत हो जाएगी, जब 2-3 साल वो कॉलेज जा रहा है, अभी तो सबको ये बच्चा पढ़ने के लिए गया हुआ है, तो सबको एक आदत बन जाएगी, सबका घर वालों का माइंड डेवलप हो जाएगा। अब यही बच्चा जब इंडस्ट्री में जाएगा, जब जॉब करेगा और रात को देर तक इसको काम करना होगा, ना ही बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी बिकॉज इसकी आदत है, और ना ही घर वालों को कोई इशू होगा क्योंकि उनको भी आदत हो चुकी है। सो इट सर्व्स द इंडस्ट्री। It's a very interesting thing if you think about it. So, but this is one of the setups, okay?